In the continuation of lecture number 9, alternating current, we studied in the last lecture the resonance RLC series resonance. Three conditions, three cases were there. पहला केस था XL greater than XC RLC series सर्किट में. Then हमने देखा था कि क्या इफेक्ट होगा सर्किट पर और XC less than XC और XL is equal to XC पे रेजोनेंस हो गया था सर्किट में. सर्किट वाज इन अंडर सीरीज रेजोनेंस था. सर्किट में करंट मैक्सिमम था, इंपीडेंस मिनिमम हो गया था और पावर फैक्टर यूनिटी हो गया था. एंड वोल्टेज और करंट आ रहे थे इन द सेम फेज. In the continuation of this lecture, here we will see the reactance curves of series RLC resonant circuit. Series RLC resonant circuit. अभी देखेंगे हम सीरीज रेजोनेंट सर्किट में फेज रिएक्टेंस कर्व्स. So we know the value of the inductance is directly proportional to frequency and capacitive reactance is inversely proportional to frequency. Resistance no effect of, not depend on the frequency. There is no relation between, no dependency on frequency. Resistance don't depend on frequency. फ्रीक्वेंसी पर डिपेंड नहीं करता. तो रेजिस्टेंस का ग्राफ क्या आएगा विद फ्रीक्वेंसी इन फिक्स वैल्यू, कांस्टेंट वैल्यू. दिस इज द ग्राफ ऑफ रेजिस्टेंस. एंड इंडक्टिव रिएक्टेंस वेरीज विद द directly proportional to the frequency. So a linear graph can be obtained with the frequency of the XL. XL का फ्रीक्वेंसी के रेस्पेक्ट ग्राफ एक स्ट्रेट लाइन आएगा. रेजिस्टेंस do not depend on the frequency, so the graph of resistance is a constant value. There is no change in the value of the resistance to change in the frequency. The current graph is this type. This is current I. The value of current becomes maximum at resonance, and XC graph is exponential graph and this graph is of this type from infinity to 0. If the frequency is 0, XC is infinite. As the frequency increases, the graph decreases towards 0. So this is the graph of XC. XC graph है, XC is inversely proportional to frequency. Now the impedance graph is opposite to the current graph. Is the graph of impedance. Impedance of the circuit becomes minimum and equal to R. This is Z value at resonant frequency. Resonant frequency पे impedance का value R के बराबर हो जाता है. Current maximum हो जाता है. This is the graph of resistance, constant value. This is the graph of XL, changes with the frequency, linearly changes. And this is the exponential graph of XC. If we take the algebraic sum of these two graphs, this increasing from 0 to positive, this is decreasing in the positive to negative, or the value of the XC is decreasing and this is increasing in positive, this is decreasing in negative. So the algebraic sum graph of this is these dotted lines. At resonance frequency, XC becomes XL. This value becomes XL value. XL is equal to this XC, or net reactance is 0, and then this graph will increase continuously. This is the graph of XL minus XC, or omega L minus 1 upon omega C. So these are the reactance curves of the resonant series RLC resonant circuit. Next is the quality factor. The quality factor of RLC series resonant circuit. Quality factor is the ratio of the maximum power delivered to the circuit
This is the ratio of maximum energy per cycle, maximum energy stored per cycle to the energy dissipated in one cycle. Maximum energy dissipated stored per cycle to the energy dissipated per cycle. So quality factor और इसको वोल्टेज मैग्निफिकेशन भी कहेंगे। जो सीरीज आरएन सर्किट है उसमें इम्पीडेंस मिनिमम हो जाता है, तो यदि उसको किसी ट्रांसमीटर या रिसीवर सर्किट के साथ लगाते हैं तो मैक्सिमम करंट लेने लगेगा सर्किट से, तो उसको एक्सेप्टर सर्किट भी कहेंगे। लेकिन सर्किट में वोल्टेज मैग्नीफाई होता है, रेजिस्टेंस वैल्यू इज वेरी स्मॉल, एक्सएल एंड एक्ससी आर वेरी लार्ज वैल्यू, करंट बिकम्स मैक्सिमम, सो वोल्टेज अक्रॉस इंडक्टर और कैपेसिटर मैग्नीफाई, बहुत ज्यादा वोल्टेज आने लगते हैं ग्रेटर देन द सप्लाई वोल्टेज। सम फैक्टर 10 or 20 or 30 factor or maybe more factor multiply by the supply voltage gives the voltage across the inductor or capacitor, तो मैग्नीफाई हो जाता है वोल्टेज, तो इसको मैग्निफिकेशन फैक्टर भी बोलते हैं। एंड दिस इज डिफाइंड एज मैक्सिमम एनर्जी stored per cycle. Q is equal to denoted by Q, maximum energy stored। कॉइल या कैपेसिटर में कितना मैक्सिमम एनर्जी स्टोर होता है पर साइकिल, हाउ मच एनर्जी स्टोर्ड इन द कैपेसिटर और इंडक्टर पर साइकिल डिवाइडेड बाय एनर्जी डिसिपेटेड पर साइकिल। वो कितना एनर्जी डिसिपेट करता है एक साइकिल में, एनर्जी डिसिपेटेड पर साइकिल। रेशो को क्या बोलेंगे हम, क्वालिटी फैक्टर ऑफ द AC circuit. This is the quality factor of AC circuit into 2 pi. This is the ratio of maximum energy stored per cycle to the energy dissipated per cycle, or it is given by, for coil, omega L upon R या ओमेगा R upon L, at resonant frequency it is omega R upon L, omega R L upon R. Omega R is the resonant frequency, omega R is equal to under root L by C, so Q is equal to 1 upon under root L by C into L by R. This is equal to 1 upon R under root L by C. This is the value of the quality factor. This is also defined as VL upon VC, supply voltage, or VC upon V. This is known as magnification factor. This is the value of series RLC resonant circuit quality factor. Now next is selectivity. Selectivity of the circuit. The graph of the current versus frequency of series RL circuit is given by, this is current versus graph of this type. At resonance circuit, this graph becomes very sharp graph, very narrow width is obtained across at the resonant frequency. So this is a selective circuit. The meaning of the selective circuit is that the ability of the resonant circuit to discriminate between different frequencies, different or particular frequencies to the other at a particular frequency. This is the discrimination of between the one particular frequency to the other. This is the discrimination of one particular frequency to the other. ये frequency पे current maximum होगा, but as we change the frequency, the value of the current in the circuit is different. So this discrimination of the circuit towards the frequencies is known as selectivity. The discrimination of the circuit
for one particular frequency to the other is known as selectivity of the circuit. And there are two frequencies at which the power becomes half. मैक्सिमम पावर का हाफ आ जाएगा यदि आने लगे पावर, तब हमें दो फ्रीक्वेंसीज मिलेंगे और दो फ्रीक्वेंसी जो डिफरेंस होगा उसको बोलेंगे बैंडविड्थ। और पावर हाफ हो जाए या गेन कितना हो जाए 70.7% ऑफ करंट मिलने लगे हमें यदि मैक्सिमम का IRMS इज इक्वल टू 70.7% ऑफ मैक्सिमम वैल्यू, तब जो फ्रीक्वेंसीज आएंगे या गेन या हमारा क्या हो जाएगा पावर हाफ आने लगेगा या गेन क्या हो जाएगा हमारा 70.7% हो जाए द रेशियो ऑफ द आउटपुट वोल्टेज टू द आउटपुट करंट टू इनपुट करंट, गेन या 3 dB आने लगे या डेसिबल में कितना आने लगे गेन 3 dB आने लगे, तो जो दो फ्रीक्वेंसी मिलेंगे सच टाइप ऑफ फ्रीक्वेंसीज आर ऑफ टू, one is F1 and second is F2. First is known as lower cutoff frequency and second is known as upper cutoff frequency. और 3 dB गेन आने लगे या पावर हाफ हो जाए या करंट हमारा 70.7% आने लगे मैक्सिमम करंट का, at this point the current is Im by root 2 और 0.707 of maximum current. तो जो फ्रीक्वेंसीज मिलेंगे उनको बोलेंगे हम कट ऑफ फ्रीक्वेंसी। F1 एंड F2 आर कट ऑफ फ्रीक्वेंसीज और हाफ पावर फ्रीक्वेंसी, दीज आर नोन एज हाफ पावर फ्रीक्वेंसीज। और 3 dB गेन फ्रीक्वेंसी, सर्किट का गेन कितना आ जाए 3 dB आ जाए डेसिबल, द यूनिट ऑफ द गेन इज डेसिबल और गेन हमारा 3 dB आने लगे, तब जो फ्रीक्वेंसी मिलेंगे उनको कट ऑफ फ्रीक्वेंसी बोलेंगे। F1 इज लोअर कट ऑफ फ्रीक्वेंसी, लोअर कट ऑफ फ्रीक्वेंसी, दिस इज लोअर कट ऑफ फ्रीक्वेंसी। F2 is upper cut off frequency, this is upper cut off frequency, and gain of the circuit is or 3 dB frequency, these are also known as 3 dB frequency. At these frequencies, the difference of these two frequencies is the bandwidth of the circuit. The bandwidth of the circuit is equal to F2 minus F1. Or the circuit, particular frequency dependent circuit can work in up to this range. Minimum frequency can take F1 and maximum F2, and that particular circuit, tune circuit or any type of circuit can work up to this range, up to this range. That range is known as bandwidth of the circuit. Now, with the help of this, you have to prove F1 F2 is equal to F0 is equal to, next derivation is to prove the F0 is equal to under root F1 F2 or at resonance IRMS is equal to maximum current is equal to at any is Im current in the circuit, current is equal to Im maximum value is equal to V upon R. I is equal to current becomes maximum and the value of the current is V upon R. This is the value of current at resonance or RLC series resonance circuit. Current it becomes I is equal to V upon R. This is the maximum value of the current, and in general current IRMS is equal to VRMS by Z. VRMS by Z mod is equal to VRMS upon under root R square plus omega L minus 1 upon omega C.
or this is equal to Vrms by the current is equal to Im by root 2. Im is equal to Irms. Im is equal to Irms by root 2, or this Irms is equal to Vrms by R. This is the current. Current in resonant circuit is equal to Im is equal to or Im by root 2. Im is Irms. Im is equal to Irms into root 2. Or substitute the value of Im is Vrms by R at resonance. Current at the time in the circuit is the maximum current by root 2 RMS value. Or Im is the value of the current at resonance. Resonance the current is Vrms by R. So current in the circuit is Vrms by R root 2 is equal to this value in general value under root R square plus omega L upon omega C square. Vrms cancel out. So R root 2 square is equal to R square plus omega L minus 1 upon omega C square. So 2R square minus R square is equal to omega L upon omega C square. So R square is equal to omega L minus 1 upon omega C whole square. So the value of R square plus omega L square the value of omega L minus 1 upon omega C is equal to plus minus R, or one value is omega L minus 1 upon omega C is equal to, if omega is the lower cutoff frequency omega, but this value is lesser than value, then the value of this part becomes smaller, this is larger, so this value is plus R. And if omega is equal to omega 2, this is larger value, so this value is minus, because this part is smaller as omega is lesser value. If omega 2 is larger value, then omega 2L minus 1 upon omega 2C is equal to plus value. This is equation number 1, this is equation number 2. Equation 1 plus equation 2. ओमेगा 1 इज द लोअर कट ऑफ फ्रीक्वेंसी, स्मॉल वैल्यू है तो पहला फैक्टर कम आएगा, ये ज्यादा आएगा तो डिफरेंस माइनस आएगा. ओमेगा 2 लार्जर वैल्यू है, ये फैक्टर ज्यादा आएगा और ये कम आएगा तो ये प्लस आएगा. तो ओमेगा 2 पे ये दोनों का डिफरेंस प्लस ले लिया मैंने यहाँ से, और ओमेगा 1 माइनस 1 अपन ओमेगा 1 है, सी का वैल्यू माइनस सी. तो सब एडिंग 1 and 2, so omega 1 L minus 1 upon omega 1 C plus omega 2 L minus 1 upon omega 2 C is equal to 0. So omega 1 plus omega 2 into L minus 1 upon C, 1 upon omega 1 plus 1 upon omega 2 is equal to 0. Taking LCM, omega 1 omega 2, so omega 2 plus omega 1 is equal to 0. Taking omega 1 plus omega 2 common, so this is L minus 1 upon omega 2C is equal to 0. Substituting first factor 0, then omega 1 is equal to minus omega 2. फ्रीक्वेंसी कभी भी नेगेटिव नहीं होता है, तो पहला फैक्टर हम जीरो नहीं रख सकते हैं फर्स्ट फैक्टर. तो टेकिंग द सेकंड फैक्टर जीरो, इक्वेटिंग सेकंड फैक्टर सी ओमेगा 1 ओमेगा 2 0, 1 अपॉन सी ओमेगा 1 ओमेगा 2 इज इक्वल टू एल. सो ओमेगा ओमेगा 2 इज इक्वल टू एल सी, 1 अपॉन एल सी. So 1 upon LC is omega R square.
और ओमेगा आर इज इक्वल टू ज्योमेट्रिक मीन ऑफ द लोअर एंड कट ऑफ फ्रीक्वेंसी। ये ओमेगा 1 लोअर कट ऑफ फ्रीक्वेंसी है और ये अपर कट ऑफ फ्रीक्वेंसी का ज्योमेट्रिक मीन क्या हो रहा है, द रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी। और इसको लिख सकते हैं 2 पाई एफ आर इज इक्वल टू अंडर रूट 2 पाई एफ 1 इंटू 2 पाई एफ 2। 2 पाई एफ आर, 2 पाई कॉमन आ गया, अंडर रूट ले लिया, f1 f2 2 pi cancel out, so resonant frequency is equal to geometric mean of the cutoff frequency। cutoff frequency के geometric mean को क्या कहेंगे हम, the value of the resonant frequency। अब यदि हम सेकंड इक्वेशन में से फर्स्ट माइनस करते हैं, if you subtract the second equation from first then another derivation will be there, तो क्या होगा, ओमेगा 2l माइनस 1 अपॉन ओमेगा 2 c माइनस ओमेगा 1l प्लस 1 अपॉन ओमेगा 1 c इज इक्वल टू r प्लस r। दिस इज इक्वल टू ओमेगा 2 माइनस ओमेगा 1 इंटू l माइनस 1 अपॉन c 1 अपॉन ओमेगा 1 माइनस 1 अपॉन ओमेगा 2 इज इक्वल टू 2r। This is equal to omega 2 minus omega 1l minus 1 upon c, taking omega 1 omega 2 LCM, so omega 2 minus omega 1, this is taking here minus inside plus, this is plus, this is equal to 2r, so taking omega 2 minus omega 1 common, this is L plus 1 upon c omega 1 omega 2 is equal to 2r, so 1 upon omega 1 omega 2 cr, this value is L, from here substituting this value as L, so omega 2 minus omega 1 into L plus L is equal to 2r, so 2l omega 2 minus omega 1, 2l omega 2 minus omega 1 is equal to 2r, so omega 2 minus omega 1 is equal to 2r by 2l, 2 to cancel, l by r, so bandwidth of the circuit is equal to omega 2 minus omega 1 is equal to r by l। सर्किट का बैंडविड्थ ये होगा, यह 2 पाई f2 माइनस 2 पाई f1 इक्वल टू r अपॉन l, 2 पाई कॉमन f2 माइनस f1 ओमेगा 2 माइनस ओमेगा 1 l, तो फ्रीक्वेंसी बैंडविड्थ कभी आएगा r अपॉन l, तो f2 माइनस f1 इज द बैंडविड्थ। नाउ बैंडविड्थ कैन बी टेकन दिस r अपॉन 2 पाई l, this also bandwidth in terms of angular velocity, this is in terms of frequency is equal to r upon 2 pi l, so this value is r upon 2 pi l, this value is half, this is half r by 4 pi l, this is r by 4 pi l, so there are another derivation, if you want to find the f1, if you subtract from fr, fr में से ये माइनस करेंगे तो f1 आ जाएगा, और यदि fr में ये ऐड कर देंगे तो f2 आ जाएगा। f1 हमें निकालना है तो fr में से ये पोर्शन माइनस कर देंगे, f2 निकालना है तो fr में ये पोर्शन सम कर देंगे, तो f1 इज इक्वल टू fr माइनस r अपॉन 4 पाई l, f2 is equal to fr plus r upon 4 pi l. These are the two cutoff frequencies, and this is the bandwidth of RLC circuit. This is the selectivity. Sharpness is at the maximum frequency, resonant frequency, and as much as the sharpness of the circuit, as much as the good selectivity of the circuit, or the discrimination of the circuit towards the different frequencies, one frequency to another frequency is known as selectivity.
This circuit is more selective because if you are changing the current, the value of the current in the circuit changes. So this is a selective circuit. Or a particular BNC works differently. And resonance circuit पे मैक्सिमम करंट देता है, तो इसको करंट एक्सेप्टर सर्किट भी बोलते हैं. करंट मैक्सिमम है, वोल्टेज अक्रॉस इंडक्टर और कैपेसिटर मैग्नीफाई हो जाते हैं, तो वोल्टेज मैग्निफिकेशन मिलता है यहाँ पे, और वोल्टेज मैग्नीफाई हो जाता है यहाँ पे. दो फ्रीक्वेंसी मिलते हैं हमें एट हाफ पावर, या गेन में 3 dB हो, या हमारा करंट कितना आ जाए 70.7% ऑफ द मैक्सिमम करंट. जब जो फ्रीक्वेंसी मिलता है, जो उनको कट ऑफ फ्रीक्वेंसी बोलते हैं. वन इज द लोअर कट ऑफ फ्रीक्वेंसी, सेकंड इज द अपर कट ऑफ फ्रीक्वेंसी. एंड विद द हेल्प ऑफ दिस डायग्राम वी ड्राइव द डेरिवेशन ऑफ द कट ऑफ फ्रीक्वेंसीज. फर्स्ट गिव द बैंडविड्थ, एंड one relation also came where the resonant frequency is the geometric mean of the cutoff frequency, and there are another two formulas, F1 and F2. F1 is equal to R minus pi R upon 4 pi L. F2 is equal to F R plus R 4 pi L.